guys, we are going to start because I am taking, क्योंकि quiz की वजह से we had to cut this short. So I'm taking just 10 minutes to go over these 3 slides जो कि उस वक्त नहीं हुए थे. And then अगर time हुआ, because Dr. Nasser ने मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए हैं, तो then we'll take questions. So basically this is, किधर गया हमारा वो बटेरा कहाँ गया? ये रहा. Okay, so जो ये बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोगों ने सेकंड हाफ में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करना है. सो बेसिकली दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आप ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकते हो. सो ये बेसिकली आप ब्रेन की एक्टिविटी कुछ नहीं देख रहे, आप लोगों से पूछ रहे हो. सो दिस इज एक्सप्रेस्ड ओपिनियन. और ये अगर आप देखो तो यहाँ पर लाइफ सेटिस्फैक्शन और 1984 to 87 में लोगों से पूछा था. These were young adults उस वक्त कि तुम्हारी लाइफ सेटिस्फैक्शन के स्कोर्स क्या हैं. तो यू कैन सी के 1 से लेके यहाँ तक ये वो जो है वो इस वाले एक्सेस पे चल रहा है. ठीक है. एंड देन ये जो है ये 2000 to 2003 में इन लोगों की सैलरी है. तो मुझे पढ़ के बताएगा कि किस लाइफ सेटिस्फैक्शन वाले लोग मेक द मोस्ट मनी. एवरेज लाइफ सेटिस्फैक्शन कितनी है पुत्र? 7 तो पुत्र मतलब लाइक मीडियन से ज्यादा है, राइट. सो ये मतलब 60-7.5 जो है, दे आर द वंस हु मेक द मोस्ट मनी. देखो कि जिनकी बिल्कुल थोड़ी थी और जिनकी बहुत ज्यादा थी, वो दोनों सॉर्ट ऑफ गरीब तो नहीं है मतलब, लेकिन बट दे आर नॉट रियली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो जो आप बहुत दुखी हो और यहाँ बहुत खुश हो, तो दोनों सूरतों में आप कहते हो अच्छा मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पे बैठा रहा हूँ. You don't really strive. And okay, so this is an American study. यहाँ पर they are taking how much money you make as a surrogate of being successful, right? I mean, making money is not the only measure of being successful. हो सकता है कि बंदा अपने घर बहुत खुश हो, right? So मतलब that's like just one example. एक चीज आप एक चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो. So इसमें आप ये देखो कि आप किसी अंडरलाइन किसी ब्रेन प्रोसेस को नहीं देख रहे. ये लोगों की एक्सप्रेस्ड ओपिनियन थी कि उनका कितना लाइफ सेटिस्फैक्शन स्कोर था, और फिर आपने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एक मेजरमेंट यानी कि उनकी सैलरी के अगेंस्ट उसको प्लॉट किया है. सो साइकोलॉजिकल रिसर्च करने का, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, प्लेजर को मेजर करने का एक चीज तरीका है. ये जो है ये भी ब्रीफली टॉक्ड अबाउट दिस द अदर डे. ये आप ब्रेन के एरियाज जो हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो ब्रेन के एरियाज हैं वो देखो कि एज एन एडिक्ट बिकम्स एडिक्टेड टू व्हाटएवर सब्सटेंस दे आर यूजिंग, कि उसमें क्या होता है. शुरू में वांटिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है और फिर प्लेटो कर रही है. ठीक है. लाइकिंग, शुरू में जब आप कोकेन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ओहो, मैंने कभी कोकेन खुद इस्तेमाल नहीं की सैडली, लेकिन जिन लोगों ने की है और मैंने उनको इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि ऐसी ज़बरदस्त उसका हाई है कि क्या बताया जाए. बट देन इट डजंट लास्ट. वो नीचे जा रहा है. इस स्टेज पे आके देखो उसकी वांटिंग वहीं पर है, बट जो उसकी लाइकिंग है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है. तो अब आपके डिफरेंट सेंटर्स जो हैं, जब वो अब कोकेन की हिट लेता है तो ये वाला सेंटर तो लाइट अप करता है, ये वाला सेंटर लाइट अप नहीं करता. और लर्निंग क्या थी यार, मतलब इसमें लर्निंग ये है कि कहाँ पे आपका डीलर है, कैसे कोकेन पीनी है, बाकी सारी चीज़ें जो इसमें एक कुछ लर्निंग तो इन्वॉल्व है ना. बिल्कुल ही ब्रेन डेड बंदा तो नहीं आई गेस के एडिक्ट हो सकता. तो सो दिस बेसिकली टेल्स यू के लर्निंग, लाइकिंग और वॉन्टिंग तीनों बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं. तो जब मुझे लोग कहते हैं ना कि मैं लोगों को कहती हूँ ना कि यू शुड क्विट स्मोकिंग, तो मुझे कई दफ़े लोग जवाब में कहते हैं नो बट आई लाइक इट. एंड आई एम लाइक, इतनी हार्मफुल चीज़ है, ऊपर से अगर तुम्हें पसंद भी नहीं है तो उसको इस्तेमाल करना तो बिल्कुल ऑक्सीमोरॉन है ना. द क्वेश्चन इज नॉट दैट यू लाइक इट, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पे ऑफ लॉन्ग टर्म, राइट. हम में और जानवरों में यही फ़र्क है ना कि हम मोमेंट्री प्लेजर में नहीं बेस्ड, राइट. वी कैन प्रोजेक्ट के आगे क्या हो रहा है. जी पुत्र, ऊंचा. Couldn't a better study be to like measure accessibility against of the thing you want against to So ये न्यूरोसाइंस की स्टडी है, वो सोशल स्टडी हो जाती है. but accessibility आपका effort में भी आपका sort of तो देखो आपकी ये सारी स्टोरी ही तब शुरू होती है जब आपकी एक्सेस है. अगर आपकी सोसाइटी में कहीं पर वो सब्सटेंस अवेलेबल ही नहीं है, राइट, तो देन द गर्ल इज मुक्ड. सो आई थिंक ब्रेन हर वक्त जो एफर्ट जाती है ना उसमें कैलकुलेट कर रहा होता है. अगर केक फ्रिज में पड़ा हुआ है और मुझे जाके सिर्फ उसको स्लाइस करके खा लेना है तो वो बहुत आसान है. केक खुद बना के खाना इज मच मोर एफर्ट, राइट. तो एक्सेस का ऑब्वियसली उसका रोल है,
बट वो इवन एडिक्ट का जो रिमेंबर एडिक्ट का ब्रेन के ये वाले पैराडाइम्स हैं, बट ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो बाकी जो आपके नॉर्मल पैराडाइम्स हैं उनसे वो हो गया। अगर उसको 10 ब्लॉक्स ठंड में जाके चल के जाना पड़ेगा वर्सेस उसके कि उसके कॉर्नर पे मिल रही है उसको, आई मीन दैट मेक्स अ डिफरेंस। देयर इज अ रीजन व्हाई अमेरिका में जो आपके काले नेबरहुड्स हैं वहाँ पर ड्रग्स इतनी ज़्यादा है। You know, so accessibility is a factor. It's a social factor. It's not a neurological factor. Okay. So हमने pain की बात की. In its purest form, pain is information about tissue damage with the goal to withdraw in present and avoid in future. मैं इस diagram के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि देखो ये यहाँ पर उसको कील चुभा है, ठीक है। ये afferent fibers हैं, अल्फा डेल्टा और सी, ये ऊपर गए। ये आपका जो है ना ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है जो कि पहला उसका रिले सेंटर है, वहाँ से वो स्पाइन में गया, यहाँ से सेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स में ये आपका मिड ब्रेन है, वहाँ पर ये जाके रिले हुआ। यहाँ से देखो ये ऊपर सोमैटो जो आपका जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है उसमें गया, साथ थैलेमस, इंसुला, एसीसी, पीएफसी, एमिग्डाला जो सारे इमोशन को कर रहे हैं ना, वो वो भी सारा कुछ लाइट अप हो रहा है, राइट। सो ये आपको बता रहा है कि कहाँ पर दर्द हो रही है और कितने जोर का टिश्यू डैमेज हुआ है। ये सारा कुछ बता रहा है कि अच्छा अगर ये तुम दर्द बर्दाश्त कर लो तो हो सकता है कि तुम्हें वो चीज़ मिल जाए जो तुम देखना चाहते हो, राइट। लोग जाकर खड़े होते हैं किसी फुटबॉल मैच से पहले या आईफोन रिलीज से पहले या टिम हॉर्टन्स के बाहर 6-6 घंटे, तो उस वक्त पाँव में तो दर्द हो रही होती है, राइट। जब आप लाइन किसने देखी है, स्क्वायर के उस साइड पर लाइन गई हुई थी, राइट। तो लेकिन वो कॉफ़ी मस्ट भी कोई पता नहीं उसमें क्या कुछ डला हुआ था, मैंने वो पी नहीं है। तो वो ये वाला जो सेंटर है ना वो ये कह रहा है कि तुम इस पेन को इग्नोर करते हो। तो देखो फिर ये होता है कि डोर्सोलैटरल फ्यूनिकुलस ये एक पाथवे है जो कि नीचे आता है, और वो जो यहाँ से सिग्नल आ रहा है ना दर्द का, वो उसको ऊपर ही नहीं जाने देता। सो इट्स नॉट दैट ऊपर दर्द हो, एक मिनट पता, वो ये नहीं होती कि ऊपर दर्द जाती है और उसको ब्रेन इग्नोर कर देता है, दैट इज नॉट एफिशिएंट। वो यहाँ से उसको सिग्नल को ऊपर ही नहीं जाने देता। तो पेन रिलीफ इज वेरी रियल। दिस इज हाउ ओपीएट्स कंट्रोल पेन। ओपीएट्स जो हैं वो इस ऊपर वाले सारे सिस्टम को म्यू ओपियोइड्स के जरिए ड्राइव कर देती हैं टुवर्ड्स हिडोनिया, और हिडोनिया जो है वो इस पेन को ऊपर नहीं जाने। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाई अगर हम इसी पाथवे को, ये जो ग्रीन में डिपिक्ट हो रहा है, किसी तरह स्टिमुलेट करने में सक्सीड कर जाएं तो वी कैन एक्चुअली रिड्यूस पेन, which we do using electrical stimulation in a procedure called the dorsal column stimulation. उसमें आप electrodes डालते हो into the spinal cord and you stimulate those columns, और उन columns से pain perception, ये chronic pain का procedure है, pain perception control हो जाती है। तुसी अपना ऐप आ लो। अच्छा जी, क्वेश्चन जी पुत्र। हाँ ऊंचा पुत्र। राइट, इट्स द सेम लॉजिक। एंड ऑल्सो रिमेंबर मैंने कहा था आपको पिछली दफा बताया था कि एक्यूट पेन जब होती है तो एक्यूट पेन के साथ ही ओपियोइड्स जो इंडोजिनस आपके ओपियोइड्स हैं वो निकलते हैं। बिकॉज देखो ना, अगर आपको एक्यूट पेन सबसे ज़्यादा चोट जब आप इवॉल्व कर रहे थे तो कब लगती थी, जब आप डेंजरस सिचुएशन में होते थे, राइट। तो आपका पाँव स्टब किया है कहीं पे, अगर वो दर्द जो है उसको उस वक्त वो इंडोर्फिन्स नहीं रिलीज करती तो वो तो आप खड़े हो जाओगे, शेर आपको आके खा जाएगा। तो वो जो मोमेंटरीली बिल्कुल पेन लॉस होता है ना, और फिर टिश्यू डैमेज भी, इन्फ्लेमेशन होती है, उससे बढ़ता है, राइट। और फिर इन्फ्लेमेशन क्या करती है, इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी दर्द को फैसिलिटेट करती है, तो फिर वो दोनों में बैलेंस हो जाता है। इट इज़ वेरी ट्रू कि कुछ लोगों को ज़्यादा दर्द होती है, जिनके फैसिलिटेशन वाले पाथवे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ज़्यादा दर्द होती है, एज़ कम्पेयर टू अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे लोग जिनके दूसरे पाथवे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनको दर्द नहीं होती। तो एक सवाल की बात है, उसके एक और जनाब जी पुत्र, ऊंचा नाम बताएं। हाँ सो पुत्र ये देखो, ये जो है ना, ये आपका जो सिंगलेट गायरस है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो एमिग्डाला है और जो इंसुला है, ये सारा वो वाला आपकी सर्किटरी है जो रिवॉर्ड्स और ब्रेन को वे कर रही है, रिवॉर्ड्स और पेन को वे कर रही है अगेंस्ट ईच अदर। कि अगर मैंने दीवार के ऊपर से छलांग मारी तो हो सकता है कि मेरा घुटना तो टूट जाए, बट दूसरी तरफ मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं, उनके साथ मिल के कुछ और करेंगे, राइट। तो देन दैट रिवॉर्ड मेक्स यू वांट टू जंप। तो वो जो फिर जो दर्द होती है वो आपका जब घुटना टूटता है दीवार जंप करते हुए तो वो आप उसको इग्नोर कर देते हो।
सो पुत्र नहीं, सो जो डिफरेंट है ना पुत्र, ये क्वांटिटी ऑफ पेन है कि आपका डोर्सोलैटरल फिनिकुलस जो है, जो इसमें जो आपके इनहिबिटरी फाइबर्स आ रहे हैं, ये ज़्यादा, सो पेन का जो बेसलाइन सेट मॉडल है ना, उसके अलावा भी यूर राइट, दिस कैन बी रीइंफोर्स्ड, और वो रीइंफोर्समेंट में आप नोट करो सारे frontal mechanisms हैं. Cognitive behavior therapy is a therapy that makes you accept things which something you don't like, and that's where the frontal lobe comes in. और Right. frontal lobe उसकी output को बढ़ाता है और आपको physical symptoms आपको कम perceive होते हैं. राइट. एक बंदा क्रिकेट से एक्साइट होता है, दूसरा फुटबॉल से, तीसरा बीटीएस के कॉन्सर्ट से, और एक बंदा जो क्रिकेट के पीछे मर रहा है वो बीटीएस और फुटबॉल से बिल्कुल इंडिफरेंट है, वो उसके लिए मीनिंग होल्ड नहीं करते, एंड वैसे वर्सा. पुत्र आप मेरे से आके बाद में पूछ लेना, बिकॉज मैंने सर से सिर्फ 10 मिनट मांगे थे, वो मुझे मारेंगे बाद में. ओके, अस्सलाम वालेकुम. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन फंक्शन. डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन फंक्शन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको स्टार्ट में वील कैटेगराइज देम इनटू द फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड द कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स. फिजिकल डिसऑर्डर्स मेनली आज कवर करेंगे. कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स we'll just touch upon them and then cover in the next lecture. Disorders brain, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको समझ आने की है वो ये है कि brain circuitry is extremely intricately connected, और हर वो चीज़ जो हम perceive कर रहे हैं, the way it makes sense is by involving a lot of ancillary circuits. ये किसी एक सर्किट का काम नहीं है कि जो सिर्फ विजन को परसीव करा रहा है, किसी एक सर्किट का काम नहीं है कि वो हमें टेस्ट परसीव करवा रहा है. A lot of things, a lot of circuits, including memory, including past experiences, including other sensory inputs, वो आपको मॉड्यूलेट कर रही हैं to the extent कि जो आपकी मोटर आउटपुट है वो भी आपकी सेंसरी परसेप्शन को ऑल्टर करती है. So this is a very very tight rope walk नहीं होती जैसे. This is a balancing act कि अगर वो सारे circuits in cohesion काम कर रहे हैं तो you make sense of the world around you. I'm looking at you people sitting here. There are people who are nodding, there are people who are busy with their laptops, but ये सारी sensory input एक picture of reality दे रही है मुझे and gives me an orientation of where I am standing. How far back is that girl in the glasses? मुझे जो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, मैं नज़र आ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको इन सिंक इस वक्त परसीव हो रही हैं. और वो जब इन सिंक होती हैं तो आपको वो रियलिटी रियल लगती है. वो जो एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी है वो इस सारी सर्किटरी से मिल के बनता है. बट डिस्ट्रप्शन के लिए वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रप्शन होनी ज़रूरी नहीं है. एनी वन लिंक गेट्स ब्रोकन एंड द होल हाउस ऑफ कार्ड्स फॉल्स. और वो उसको आप एग्जाम्पल दे सकते हो. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट द बटरफ्लाई इफेक्ट इज? सो वी आर ऑल फेमिलियर विद इट. इट्स लाइक अ बटरफ्लाई इफेक्ट. एक चीज़ गड़बड़ होती है और वो अल्टीमेटली पोटेंशिएट करती है उस मैसिव डिस्ट्रप्शन को. Disruptions of the brain function come in different forms, different shapes, depending on what the brain function is. और functions brain के बहुत सारे हैं, और उन सारी चीज़ों में से जो भी चीज़ गड़बड़ हो सकती है वो सारे disorders की form में हमें मिलती है. So there are physical disruptions of the brain and there are cognitive disruptions of the brain. Physical disruptions of the brain के अंदर वही जो हमने फिजिकल चीज़ों की बात की कि या तो आउटपुट की डिसऑर्डर्स हैं या इनपुट के डिसऑर्डर्स हैं. आउटपुट के डिसऑर्डर्स मूवमेंट से रिलेटेड हैं. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बसमा, द ओनली आउटपुट इन द ब्रेन दैट वी हैव इज मोटर. और वो जो आउटपुट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स लेती हैं, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में उनके अगर डिस्ट्रप्शन होती है तो वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स बनती हैं. सो बेसिकली ऑल द डिजीजेज ऑफ द ब्रेन आर ईदर movement related or perception related, physical, or cognition related, mental. So जो physical हैं उसमें movement related में तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम just to take a few examples, we'll talk about
2 or 3 of the movement problems जो हमें समझ आने में help करेंगी. One way of learning the function of the brain is to try to study the disordered function of the brain. ठीक है? So we'll start off with this gentle looking old man. Anything peculiar you notice about his face? His smile is crooked. You were about to mention the same. आपका भी हाथ खड़ा हुआ था. It feels like half of his face is not responding the same way the other half should. Good, good, good. This is what happens in a stroke. Stroke है जिसमें हमारी मूवमेंट की आउटपुट डेड हो जाती है, राइट? उसकी डेड होने की डिफरेंट स्टेजेस हैं. वीकनेस भी हो सकती है, कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट भी हो सकता है, लेकिन इन ऑल प्रैक्टिकल इफेक्ट वो जब मूवमेंट कम या ख़त्म होती है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं. स्ट्रोक can be as mild as just a drooping of the lips, or can be as severe as complete loss of movement of all parts of the body. So इसके दरमियान सारा स्पेक्ट्रम है, लेकिन जो चीज़ आपको एम्फसाइज होने वाली है वो ये है कि दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ द मेन एग्जीक्यूटिंग सिस्टम ऑफ मूवमेंट. हमने बात की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, वी वर टॉकिंग अबाउट 2 सेपरेट कंट्रोल सिस्टम्स. एक सिस्टम है जो मूवमेंट को एग्जीक्यूट करता है और दूसरा सिस्टम कौन सा है? द फाइन ट्यूनिंग सिस्टम. स्ट्रोक is a disorder of the executing system of the brain. वो disorder different तरह से हो सकता है. एक part of the brain can be damaged और इसको blood supply ना मिले तो वो area dead हो जाता है. You see this black part of the brain? This is the dead part. When a certain tissue dies, it undergoes physical changes. और brain में जो physical changes आते हैं, the cells lose their integrity and the whole thing appears black on a CT scan. So this is called an ischemic stroke. Ischemia का मतलब है जब oxygen और blood flow carrying that oxygen restrict हो जाता है. On the other hand, there is another kind of stroke जिसमें कोई blood vessel rupture कर जाती है. वो उस area में physical damage करती है, tears the connections, tears the fibers, and at the same time, since cranium is a fixed volume, जब भी उसके अंदर एडिशनल चीज़ जाएगी, इट विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट्स ऑफ द क्रेनियम. सो जब ब्लड वहाँ पे एक्स्ट्रा जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, वैसे तो ब्लड रूटीन में जा रहा है बट वो उतना ब्लड निकल भी रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू. बट व्हेन अ ब्लड वेसल रप्चर्स, द ब्लड एक्यूमुलेट्स इन द ब्रेन एंड दैट इज कॉल्ड द हीमेटोमा. वो जब हीमेटोमा बनता है तो वो हीमेटोमा इस फॉर्म में हमें नजर आता है ऑन ए सीटी स्कैन. दैट ऑल्सो कॉजेज डिसरप्शन ऑफ द ब्रेन फंक्शन एंड दैट ऑल्सो मैनिफेस्ट्स एज स्ट्रोक. सो स्ट्रोक is a problem of the executing system of the brain. इस तरह executing system की और भी problems हो सकती हैं. spinal cord injury हो गई, वो वाला system जो messages carry कर रहा है to the muscles, अगर वो disconnect हो जाता है दरमियान में, that also causes a disruption of the executing system. लेकिन उसमें हम इसलिए उसको सिर्फ pure executing system का नहीं कहते, because spinal cord is not only carrying the executing fibers, it is also carrying a lot of sensory fibers, it's carrying the fine tuning fibers as well. तो उसमें disruption एक gross level की होती है. Yes, पुत्र. So motor area में होता है या motor association? Yes, किसी भी एरिया में होगा, उसके accordingly deficit होगा. Mainly executing system कौन सा है? Motor area. एरिया कौन सा है? इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइन ट्यूनिंग एरिया. वो प्लान भी कर रहा है, उसकी मूवमेंट को एडजस्ट भी कर रहा है. सो जो मेन मोटर कॉर्टेक्स है, जब उसके अंदर डिस्ट्रप्शन होगी और द फाइबर्स गोइंग आउट ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, उसमें जब डिस्ट्रप्शन होगी, ये जो हीमेटोमा आपको नजर आ रहा है, दिस अगर आप नोट करें तो दिस स्पेयर्स अ थिन रिम ऑफ ब्रेन ऑन द आउटसाइड, ऑन द पेरिफेरी. सो कॉर्टेक्स लाइज ऑन द पेरिफेरी. So इसमें cortex spared है, but it's the fibers that go out from the cortex which are disrupted here. ठीक है? So mainly वो motor cortex का fibers. Parkinson's disease.
is a disease of the fine tuning system. Parkinson's disease, अक्सर आपने बुजुर्गों को देखा होगा, they stoop a little, थोड़े से shake करते हैं, and they walk with small steps. That's how a Parkinsonian patient walks. वो जो tuning जो disorder है, उसमें it's not that the person cannot walk. It's not that the person cannot reach out and grasp a glass of water. It's just that the finesse of his movement gets affected. और वो he may actually, you know, hit the glass, he may actually fall because उसके वो जो steps हैं, अब वो उतने fine नहीं रहे. So Parkinson's disease is a disorder of the extrapyramidal system, the fine-tuning system. Parkinson's disease का सबसे predominant feature क्या है? The whole body is shaking. Before the term Parkinson's disease was coined, the whole thing was called shaking palsy. The whole body of the person is shaking. Head भी nod कर रहा है, हाथ भी हिल रहे हैं, पाँव भी हिल रहे हैं. Shaking palsy की जो term है, उसमें palsy is a misnomer. They used to think that there is a weakness. वो weakness नहीं है. The inability to execute movement is because वो fine tuning उसकी नहीं है. So उसमें execute करने का deficit नहीं है. So I can understand, like for example, if somebody tries to reach out and grab a glass of water, तो उसके अंदर there isn't that smoothness, so that's why they're shaking. But why do they also keep shaking if they aren't trying to do anything? If they are not trying to do anything. Good question. Do we have like some regulatory system that keeps us like still and stable? Yes, absolutely. If I lift your hand and tell you not to move it, और उसके बाद मैं आपको कहूँ कि आपने खुद बिल्कुल उसको सस्टेन नहीं करना, होल्ड नहीं करना, and you just let it fall, it will still fall with a certain speed. अगर मैं वही लकड़ी का एक पीस उठा के उसको छोड़ दूँ, तो your hand will not fall like a log. There is a resting state of contraction, which is called tone. So Parkinson's में वो tone भी disturb हो जाती है. How many people here have seen a Parkinsonian patient? Okay. So जिसने नहीं देखा हुआ वो देखें, और मतलब एक stare करना is rude. So आप discreetly देखो, आपको fine tuning कितना coding intensive है, पता चलेगा actually देख के जब वो absent होता है. So जैसे जो हम still रहते हैं, this is an active state. The brain is actively trying to strive it. उठ के बैठना can take a Parkinsonian patient 45 minutes. So the fine tuning system is really, really important. Posture. मैंने अभी आपको बताया कि उनका posture भी upright नहीं रहता, stoop करना शुरू कर देते हैं, they don't know, they tend to fall. जो हमारा center of gravity है, one fact when we are standing up straight is that our center of gravity lies right above the base. ठीक है? When I start to bend, like जब normally आपको bend करने को कहते हैं, तो you don't keep your lower part straight and bend. आप lower part पीछे जाता है. You'd see these legs, they're not absolutely upright. They're moving backwards so that my center of gravity still lies above my feet. Parkinsonian patients आगे की तरफ stoop करते हैं and they tend to fall forwards. One of the reasons they have those short steps is that they are trying to prevent their body from falling over. जी पुत्र. Does it affect their speech as well? Yes, it does. All the movement outputs are affected by Parkinsonism in different people to different extents. The person I know who has Parkinson's keeps groaning, and it's also in a shaky voice, and he can't prevent that. So, does that have to do? Yes, absolutely. वही बात है कि मसल्स की रेस्टिंग टोन, मसल्स की एक्टिविटी, वो सारी अपनी फाइननेस लूज कर देती है. सो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें भी मसल्स हैं. कितना टाइट होना है, किस पिच पे आवाज़ निकलनी है, वो मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं. एंड व्हेन द मसल्स आर अफेक्टेड, वो सारा कंट्रोल लूज हो जाता है. पता नहीं है मुझे करना चाहिए कि नहीं. कितने लोग करना चाहिए? हाउ मेनी पीपल कैन आइडेंटिफाई और रहन दो की हो रहा है, रहन दो कोई गल नहीं. इस तरह की एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जो इस तरह बोलती है विदाउट मूविंग लिप्स. कोई हाथ खड़ा हुआ है उधर से. चौधरी परवेज का बड़ा भाई चौधरी शुजात. That's exactly what I'm talking about. उसकी आवाज़ बिल्कुल मोनोटोनस हो गई है, मोनोटोन में बोलता है. मेरी आवाज़ में जो ऊपर नीचे जो हमारी रूटीन की आवाज़ में पिच चेंज होती है, इंटोनेशन चेंज होती है, उसकी आवाज़ में कोई नहीं है.
वो इसीलिए है कि उसके मसल्स उस स्पीड से वोकल कॉर्ड्स को मूव नहीं कर सक रहे, और वो इतनी, वो जिसे कहते हैं ना, वो लेबल हो गई हुई है कि वो सिर्फ मैंने बात की है और उसने कह दिया कि चॉइस शुजात की बात हो रही है. He has Parkinson's. He was one of the first people implanted with an implant in Pakistan. Anyway, जी बेटा. There's still a few people who have a very monotone and they don't have the disease. So what is that linked to then? Is it just the way that Is it just the way they are? There are people जो spine के problem की वजह से भी तो bend करते हैं. They don't necessarily have those short steps or high tone. Different causes can lead to same kind of manifestation. लेकिन one of the causes of this thing or monotone is Parkinson's. They have similarly, हम जब बात करते हैं, स्माइल कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं, ग्रोन कर रहे हैं, फ्राउन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मसल्स मूव कर रहे हैं. So Parkinsonian patients have a mask face. You cannot tell the extra ha 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 ha. That's how they will laugh. You will not be able to identify the facial expressions. Sir, is there a cure for Parkinson's? Like you talked about the implantation. So is there a cure or is there just care now? Like It's both. We'll talk about it at the end. आपने भी हाथ खड़ा किया था. I just wanted to ask you, does this depend on age? Yeah, is it genetic? It is genetic and depends on age. You are more likely to develop Parkinson's the older you are. People less than 60 have 1 in 100,000 chance of developing Parkinson's. Who's People the very above. famous American actor who got... We are going there. Sorry, apologies, apologies, apologies. जी पुत्र. So we say that our neurons have Sorry, मेरा मतलब था मैंने इनसे पूछना है. our neurons have a baseline potential and Yes. they cross the threshold and there's going to be a spike. So does it happen that simply the noise in our or case Parkinson's patient causes neurons to spike when they're not supposed to, or is it a lot more complex? No, it's a lot more complicated than this. जब हम fine tuning system की बात कर रहे थे, तो if you remember, there is a complicated diagram I showed you with multiple feedbacks, and I said कि ये छोटा वाला जो network है, this is the direct pathway, and then this bigger network is the indirect pathway. Those were only 2 of the many hundred pathways that continuously, simultaneously go on to smoothen our movement. और वो उसकी disruption से होता है. वो noise has got nothing to do with it. Just can I clear up that the disruption in the posture, is that due to the change in resting tone? Yes, yes. The flexors of your body contract more than the extensors. It's known. ठीक हो गया जी? This is what we were talking about. Back to the Future, किस किसने देखी हुई है? Now can you identify who this is? Michael J. Fox. Michael J. Fox has Parkinson's, early onset Parkinson's, उसको बड़ी young age में शुरू हो गया था, और to the extent कि वो इतना इससे involved और affected है कि उसने MJF बनाई, Michael J. Fox Foundation बनाई है to fund the research on Parkinson's disease. Music, ये पता नहीं हमारे दौर का music है, कोई जानता है कि नहीं जानता? Ozzy Osbourne, good. He has developed Parkinson's. Yes. ये थोड़ी सी blurred इसलिए है कि this, I have just zoomed out of this picture. This is the iconic moment when he was standing over Sonny Liston after he knocked him out, and he was trying to taunt him to get up, get up. Muhammad Ali has Parkinson's, had Parkinson's. जी बच्चे. was it because of his age or like was Sorry. was it like Parkinson's? I mean, it can be genetic as well, but do you think his profession had anything to do with him getting it? There was a very long time जिसमें ये बात बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही है, to the extent के शुरू में इसके डिसऑर्डर को, मोहम्मद अली के डिसऑर्डर को, they would not diagnose it as Parkinson's. They used to call it, anybody knows क्या कहते थे उसको बॉक्सिंग की वजह से? Punch drunk syndrome. That he has received so many punches कि उसका ब्रेन हर पंच के साथ शेक होता रहा है और वो माइक्रो इंजरीज होती रही हैं, and he is now drunk with punches. ठीक है? Which ultimately proved to be wrong because number one, Muhammad Ali was known for not letting any punch land on him.
ठीक है ना? So he did not get the kind of punches which would probably have caused that punch drunk syndrome. दूसरा, there is a proper definite pathology in the brain that leads to this, and that's what Muhammad Ali had. Okay. Parkinson's disease के अंदर और fine tuning वाला part जो disturb होता है, so like अगर वो disturb होता है, how do they learn like anything new? I mean, for example, आपने जो example दिया, बेटा लर्निंग के सेंटर्स तो बिल्कुल डिफरेंट हैं. learning के अंदर like if you do something and गलत हो गया, so like that's how you kind of उसको दोबारा सब करते हो, right? So how do they learn something new or like कुछ उन्होंने गलत करके, for example, चलने का देखो हमने कोशिश तो की है कि अपने सारे लेक्चर्स को इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन लेक्चर्स बनाएं, बट स्टिल दे बिल्ड ऑन व्हाट वी ऑलरेडी टॉट यू. सेरिबेलम का एक फंक्शन आपको हमने बताया था कि सेरिबेलम के अंदर वो प्री सेट मॉडल्स सेव होते हैं, whether they be of the movement, whether they be of speech, whether they be of anything, dance moves, song, speech, जो भी है. सेरिबेलम उन मॉडल्स को सेव करता है. मेन मेमोरी सेव होती है हिपोकैम्पस में. सो मेमोरीज लर्निंग जब आपकी रीइंफोर्स होती है तो उस मेमोरी को उठा के सेरिबेलम में डाल देती है. इस सारे पाथवे में कहीं पे भी एक्स्ट्रा पिरामिडल या फाइन ट्यूनिंग सिस्टम नहीं आ रहा. So the person can learn new things, they will still have difficulty doing them because the fine tuning system won't let them do it. If a person with Parkinson's decides to learn to play the piano, उसको वो ये पता चल जाएगा कि मुझे ये सॉन्ग बजाने के लिए ये 3 फिंगर्स इस तरह मूव करनी है, but he may actually have difficulty executing that movement. That has got nothing to do with his learning. बताओ, am I making sense? लेकिन अगर उसको piano से बज नहीं रहा है, तो like उससे गलत बजा रहा है, I don't know like वो reinforce नहीं कर सकेगा. I think there is some truth in what she's saying because the models learn by repetition. वही ना, वो और reinforce उससे नहीं कर repetition, सकेगा, हाँ, बिल्कुल. लेकिन उसको कॉन्सेप्ट का, उसको इनिशियल लर्निंग हिपोकैम्पस तक वाली चीज का उसको प्रॉब्लम नहीं होगा. He may have problem reinforcing that thing into cerebellum क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं कर सक रहा. ठीक है? ओके. फाइन ट्यूनिंग सिस्टम की डिस्ट्रप्शन है. फाइन ट्यूनिंग सिस्टम में जिस तरह हमने कहा बहुत सारे फीडबैक लूप्स इन्वॉल्व हैं. वन ऑफ द फीडबैक लूप्स इन्वॉल्व्स अ रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम कॉल्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा. नाइगर मीन्स ब्लैक. दिस इज जब आप ब्रेन के सेक्शन काटते हो तो दिस इज दैट एरिया विच विदाउट एनी स्टेनिंग अपीयर्स ब्लैक. और सबस्टेंशिया नाइग्रा हैज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ न्यूरॉन्स दैट secrete dopamine as a neurotransmitter. So Parkinson's is a disease of deficiency of dopamine. इसीलिए लोगों ने ये ट्राई किया कि हम डोपामीन एक्सटर्नली दे दें तो मे बी हम ट्रीट कर सकें पेशेंट्स को. येस दैट कैन बी डन, लेकिन डोपामीन, हमने एक और चीज़ की बात की थी, ब्लड ब्रेन बैरियर. देयर इज अ बैरियर दैट डज नॉट लेट एवरीथिंग इन द ब्लड एंटर द ब्रेन. वो फिल्टर करता है, एक्टिवली सिलेक्ट करता है कौन से मॉलिक्यूल्स जाएंगे. सो एक्सट्रिंसिक डोपामीन फेल्स टू एंटर द ब्रेन पैरेन्काइमा. सो फिर when this was identified, what they did was they very finely altered the molecule of dopamine और उसका एक isomer बनाया. What are isomers? Altered chemical forms of a molecule. Similar, but maybe mirror image. Maybe mirror image, right? So उन्होंने levodopamine बनाई, which was called levodopa. Normally उसका एक dextro structure है. उन्होंने उसको levo में convert किया, and lo and behold, it could easily pass through the blood-brain barrier. And there are enzymes in the brain that convert that levo into dextro back into dopamine. And dopamine जब आप देते हो Parkinsonian patients को, तो they get better. जी पुत्र, आपका हाथ आया था. Well, I was saying isomers just have opposite spins. Yes, सिर्फ spins नहीं है, वो तो एटॉमिक उसकी बात है ना. आइसोमर्स पूरे मॉलिक्यूल्स की हैं. सो मॉलिक्यूल्स में स्पिन ना भी हो, उसका जो लेटरलिटी है वो डिफरेंट है. सॉरी, गो अहेड. Sir, I just wanted to ask if the disruption in Parkinson's, is there anything that increases the rate at which this disruption might happen? For example, stress or like. Yes, there are things that worsen Parkinson's. There are things that can slow down the progression of the disease,
and there are things that can reverse the symptoms, but this is a neurodegenerative disease, one of those diseases in which neurons gradually keep on dying. और वो चीज़ हम लोग slow down कर सके हैं, but we've still not been able to, cure the disease, cure the neurodegeneration. उसकी माइक्रोस्कोपिक बहुत सारी इसकी मैनिफेस्टेशंस हैं सेल में, जो डिस्ट्रप्टिव हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं, they're called neurofibrillary tangles. Forget about what they're called. वहाँ पे harmful substances बनते हैं which interfere with the chemical metabolism of the protoplasm and cell dies. So cell death is inevitable in Parkinson's. It will progress. You can alter the rate of its progression to the extent कि वो बहुत slow करके non-progressive हद तक ला सकते हो, but it is a progressive disorder. ठीक है? आपका भी question था. So you said that in most cases it's genetic, where they get physical damage. So most like NFL players जो होते हैं, उनका they have a higher rate of the higher chance of developing Parkinson's. Is that mostly? I didn't know that. They have a higher chance of developing physical neurodegenerative disease, and Parkinson's falls under that. Okay. Is that mostly because of physical damage to the brain? यार वही है, वो मोहम्मद अली वाली बात है ना, इट वाज थॉट कि वो फिजिकल डैमेज तो हो रहा है. देयर इज एक क्लोज्ड कंटेनर. जामन किस किस ने खाए हैं? रेडी से लेके किस किस ने खाए हैं? व्हाट दे डू इज वो जामन को गडवी में डालते हैं, ऊपर से नमक लगाते हैं, एंड देन दे पुट अ लिड ओवर इट एंड शेक इट. व्हेन दे गिव इट अ गुड शेक तो जामन अंदर जाता है तो वो हार्ड है, बट व्हेन इट कम्स आउट वो थोड़ा सा पिलपिला हुआ है. Right? This is what happens to the brain when it gets shaken. वो एक closed container में है, वो गडवी के अंदर है, और externally अगर आप skull को ना भी damage करो, just the fact कि एक blunt चीज़ आपको hit करती है, the whole brain gets shaken. Brain का अपना एक inertia है, वो inside the cranium, it hits against the inside walls and it gets injured. So injury तो होती है, blunt injuries होती हैं. कितनी हो रही हैं over a period of time, क्या उसकी मैनिफेस्टेशन है, क्या लोकेशन है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट अल्टीमेटली डिटरमिन्स के किस तरह का आपको डिसऑर्डर होगा. सो उसकी मैनिफेस्टेशन उनमें ज़्यादा है, बट नॉट द डिजीज पर से. जी, माइक्रो कंकशन जो होती है, इवन जब लोगों को चोट नहीं लगती, तो आई मीन अमेरिका में नाउ दैट दिस हैज बिकम बेटर नोन, जो एक्चुअली फुटबॉल टीम्स की रिक्रूटमेंट इज एक्चुअली डाउन इन हाई स्कूल्स. द एविडेंस इज वेरी क्लियर दैट जो कंकशन होता है आप उससे पूरा रिकवर नहीं करते. किसने मगज किसने खाया हुआ है? देखा है कि कैसे वो फ्राइबल होता है. आई हैव नेवर हैड इट. कोई यार खुदा का खौफ करो. कम ऑन. I've made a career out of trying to repair the damage. यार खुदा का खौफ करो. Human brain. यार whatever, it's brain nonetheless. Maybe you'd understand it even better. Maybe. So it's very very friable. तो चोट बहुत जल्दी लग जाती है दिमाग को. एंड बिल्कुल अगर आपका जोर का कार का एक्सीडेंट तो कुछ कंकशन से रिकवर करने में कई दफ़ा 2 साल लगते हैं. 9 months तो कहीं पर भी नहीं गए. मैं जनरली पेशेंट्स को जब एक्सप्लेन करता हूँ, जब हमने ब्रेन सर्जरी करनी होती है, तो टू गिव देम एन आइडिया ऑफ हाउ लाइकली इट इज़ टू कम आउट ऑफ सर्जरी विद अ डेफिसिट, जब आपको उसको कॉम्प्लिकेशंस एक्सप्लेन करते हो तो यू हैव टू काइंड ऑफ टेल देम कि ये बिल्कुल स्क्विशी सा सॉफ्ट, जेली इज स्टिल हार्डर. अ लिविंग ब्रेन इज वेरी, एग्जाम्पल बड़ी अजीब सी है, लेकिन इट्स लाइक हाफ बेक्ड ऑमलेट. It's so delicate. हम सक्शन से जब ब्लड अपने ऑपरेटिव फील्ड में से सक कर रहे होते हैं, तो इफ यू एक्सीडेंटली टच द सकर टू द ब्रेन, प्लॉप, इट गेट्स सक्ड. सो इसलिए दिस इज वेरी डेलिकेट. डॉक्टर बसमा की बात बिल्कुल ठीक है. Those kids who are abused during childhood, abuse doesn't have to have broken bones, abuse doesn't have to have bruises. Just grabbing a child and give him a good shake is enough to cause abuse, cause physical damage to the brain. So it's very delicate. Anyway, ये substantia nigra है of a normal person, and this is the substantia nigra of a person with Parkinson's, जिसमें वो pigment producing cells जो dopamine बना रहे हैं, they're gone, and the substantia nigra appears less black. It actually doesn't appear black.
One of the manifestations, one of the treatments for Parkinson's is कि वो feedback loop जो अब काम नहीं कर रहा, आप उसके alternative feedback loops को reinforce करो, या जो hyperactive loops हो गए हैं in response to the loss of that loop, आप उनको suppress करो, and you externally recreate the balance of fine tuning. And that is done by electrical stimulation. That is what is called deep brain stimulation, putting in electrodes, stimulating certain parts of the brain, subthalamic nucleus ko karte hain, which is what balances the activity of the substantia nigra. Ji Puttar. Okay. The problem that I'm having with that is that our fine-tuning system is like on. It's just doing its job. Yes. Consistently. Deep brain stimulation, I thought that was like a one-time surgery. No, this is an implant here. You put in an electrode, connect it with the battery, and the battery stays there on throughout under your collarbone. And obviously, since battery has a limited life, it runs out after a certain time. You have to replace the battery to restore function, right? Okay. और ये जब हम implant करते हैं तो this is done in awake patients, just to identify कि हम कौन से area में जा रहे हैं. We can actually see the person's hand shaking, and when we turn on the battery, if we are at the right place where we need stimulation, if we turn it on, the hand stops moving, and it's instantaneous. So it's very dramatic. You see it once, you'll never forget it. This is what end result of the surgery is. You put in those wires at the areas where you want them to, and then they are exteriorized from the skull, and then under the scalp, under the skin, they're connected with the battery that stays within you. Another movement disorder is when the movement becomes so disruptive that it becomes uncontrollable, dangerous, and ultimately so bad that the person actually loses consciousness. That is called epilepsy. In epilepsy, ये क्या हो गया लड़की? Okay. In epilepsy जो एक्चुअली चीज़ हो रही है वो शॉर्ट सर्किटिंग है. उसमें जो सर्किट ख़राब हो गया है वो फायर करता है रैंडमली और स्पॉन्टेनियसली. जो डॉक्टर बसमा कहती हैं स्पॉन्टेनियस फायरिंग अगर होगी तो या वो मेनिया हो जाएगा या एपिलेप्सी हो जाएगी. नॉर्मली भी होती है लेकिन वो कंट्रोल्ड होती है. सो स्पॉन्टेनियस रैंडम फायरिंग जब होनी शुरू हो जाती है, कोई एक न्यूरॉन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है, उसकी एक्साइटेबिलिटी इतनी होती है कि उसका जो रेस्टिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी है इट स्टार्ट्स टू रीच द थ्रेशोल्ड एंड स्टार्ट्स टू फायर, जो कि नॉर्मली नहीं करना चाहिए. एंड वंस इट स्टार्ट्स टू फायर इट एंड्स अप प्रोड्यूसिंग अ प्रोपगेटेड इम्पल्स, और वो प्रोपगेट करती है टू ऑल इट्स एक्सॉन्स, और वो एक्सॉन्स एडजेसेंट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो आगे से फायर करते हैं, एंड वो एक रैंडम बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी चलना शुरू हो जाता है. That leads to G. So you said that it's a problem with the resting potential, but it can also be like we need a threshold of a stimulus. So like it can be sensed by the neuron. So is there a problem with that as well? It's a twofold problem. कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आपकी रेस्टिंग एक्टिविटी स्पाइकी होनी शुरू हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू हिट द थ्रेशोल्ड एवरी टाइम, विच इट्स नॉट सपोज टू व्हेन इट्स नॉट सपोज टू फायर. देयर आर अदर कंडीशंस जिसमें आपका थ्रेशोल्ड लोअर हो जाता है, सो वही जो रेस्टिंग एक्टिविटी है दैट स्टार्ट्स टू बिकम प्रोपगेटेड which it's not supposed to. So threshold का lower हो जाना भी, they're all conditions of hyper excitability. The cells become overly excitable. जी पुत्र. Sir, connecting to that, we also know that जैसे patients who have epilepsy, उनको flashing lights से भी हो जाता है. So that means कि उनकी hypersensitivity हो जाती है to something that might be normal for patients who might not. Not really. Hypersensitivity का मतलब है कि stimulus है from the outside और उसको रिस्पॉन्ड आप ज़्यादा कर रहे हो, राइट?
एपिलेप्सी में स्पॉन्टेनियस फायरिंग है। स्पॉन्टेनियस फायरिंग डिपेंड करता है किस रीजन में हो रही है। अगर वो मूवमेंट के रीजन में हो रही है तो दैट विल प्रोड्यूस एन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। अगर वो विजन के एरिया में हो रही है तो दैट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लैशेस ऑफ लाइट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो, क्योंकि हमने कहा था कि इट इज दी सेंट्रल कनेक्शंस दैट आर स्पेसिफिक फॉर फंक्शन। एक्टिविटी सारी इलेक्ट्रिकल है, इफ यू जस्ट फ्लिप वन कनेक्शन विद द अदर तो वो दूसरा फंक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एग्जैक्टली वही है। Sorry, I was asking कि जो उनका trigger होता है, वो somebody who might not have epilepsy. यस, इन दोज केसेस जिसमें थ्रेशोल्ड लोअर हो गया है, वही अब यही हम बात कर रहे हैं ना कि या तो बेस लाइन एक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो जाए या आपका थ्रेशोल्ड ही इतना लोअर हो जाए कि जो रेस्टिंग एक्टिविटी है विच इज़ नॉट सपोज टू कॉज एनी डिसरप्शन कॉजेज डिसरप्शन। थैंक यू। ओके, इसमें भी यही मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये आपका थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर अगर हिट कर जाए तो वो स्पाइक बन जाती है। इस रेंज के अंदर अंदर अगर एक्टिविटी रहे तो इट डज नॉट प्रोपगेट, इट ओनली प्रोपगेट्स व्हेन इट हिट्स दी थ्रेशोल्ड। और वो जो थ्रेशोल्ड है या वो लोअर हो जाए तो एक्टिविटी हिट होना शुरू हो जाती है, या एक्टिविटी इतनी स्पाइकी हो कि वो थ्रेशोल्ड को हिट कर दे। Sir, यस, what exactly causes epilepsy? Like, is it genetic? Is it something related to age? Because like we understand this is happening in the brain, but like how? There are multiple causes for epilepsy, and one of the most interesting things in medicines is when we don't understand anything we call it essential, right? So इसी तरह ब्लड प्रेशर की 500 कॉजेज हैं। किडनीज पूरा फंक्शन नहीं कर रही, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके डिस्टर्ब हो गए हैं, फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, हार्ट पूरा पंप ज़्यादा कर रहा है, मल्टीपल कॉजेज हैं। लेकिन ये सारी कॉजेज अगर रूल आउट भी कर लो और फिर भी किसी की ब्लड प्रेशर हाई हो, वी कॉल इट एसेंशियल हाइपरटेंशन, just because essential means we don't know what's causing. So similarly, epilepsy may be, there is a primary epilepsy, there is a secondary epilepsy. Secondary epilepsy वो है जो किसी न किसी identifiable cause से हो रही है, और primary epilepsy के अंदर deficit seizures का है. We don't know what is causing those seizures. We don't know why the cells have become hyper excitable, लेकिन वो fire करना शुरू कर देते हैं. And जो secondary epilepsy है उसमें to treat epilepsy, to cure epilepsy, rather than giving anti-epileptic drugs, you need to cure the cause. अगर ट्यूमर है जो ब्रेन के किसी एरिया को कंटिन्यूसली ट्रिगर कर रहा है, आप ट्यूमर को निकाल दो, एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाती है. अगर कोई इंजरी हुई है जिसने एक स्कार छोड़ दिया इन द ब्रेन, दैट स्कार कैन कंटिन्यूसली कॉज शॉर्ट सर्किटिंग एंड स्टार्ट फायरिंग, दैट कैन कॉज एपिलेप्सी. इसी तरह जब आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होगी तो फिर आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देनी है. और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी इसी वजह से दो तरह की हैं, जो आपकी रेस्टिंग एक्टिविटी को भी कम करती हैं और वो भी हैं जो आपके थ्रेशोल्ड को हायर कर देती हैं. जो रेस्टिंग एक्टिविटी को कम करती हैं एंटी एपिलेप्टिक्स, उसमें आपके चूंकि वो एक न्यूरॉन की रेस्टिंग एक्टिविटी को कम कर रही हैं, वो सारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करती हैं. एंड देयर इज अ known effect of long-term slowing down of activity in those who are on anti-epileptics for long time. So इसलिए newer जो anti-epileptics आ रही हैं उनके अंदर ये effects नहीं हैं. यहाँ से हाथ आया था एक, उसने कहा कि चलो कोई नहीं है, मैं ही हाथ खड़ा कर देता हूँ, है ना? Okay, sure, I will. जी बच्चे. Why was one of the solutions to preventing epileptic episodes the keto diet, or was that not really equals? It works. It works. ये कीटो का तो डॉक्टर बसमा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे. So one High of the true ketones. applications of keto is in जिन बच्चों में specifically use होती है, जिनमें and you have to be refractory to 2, 3, 4 दवाइयाँ, because it's very hard on kids. And उस keto diet में actually आप सारे carbs निकाल लेते हो. It's a high fat, low high fat and then some protein diet. And no carb. उसमें the thought process is that जो brain uses ketones preferably, and so एक तो वो होता है, और दूसरा it is thought that the fat in the diet somehow stabilizes The cell membrane, neuronal जो neuronal stability को बढ़ाते हैं. So my question is related to the epileptic drugs you talked about.
I witnessed Epileptic drugs, नहीं, anti-epileptic drugs. So I witnessed a person having an epilepsy attack, and he was just on the floor and he was controlling unshakably, and he had this pouch on him that people then gave him a shot, administered a shot, and that calmed him down. So what kind of drug, like is it serotonin or a mixture of something that calms down the nerves? No, that's benzodiazepines जो non-specifically suppress करती हैं पूरी brain activity. So immediately to abate a seizure, जब हो रहा हो तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को तो अंदर जाते हुए ब्लड लेवल अचीव करते हुए वो बनाते हुए लेवल बहुत टाइम लगता है. सो देयर आर ड्रग्स जो डिफ्यूजली सारी एक्टिविटी को सप्रेस करती हैं. दे आर यूज्ड टू अबेट द सीजर इवन इन द मिडल. Do we know whether during an epileptic episode the activity is all throughout the brain or just in the movement? Excellent question. Good CP marks. Yes, there are seizures जो थोड़ी दूर spread करके die out कर जाती हैं. They're just like ripples in a pond. If you throw a stone strong enough, the ripples can get to the other edge. But अगर आप थोड़ा छोटा सा पत्थर फेंका है, जोर नहीं लगाया, तो वो थोड़ी देर के बाद जाके die out कर जाती हैं. So there are different kinds of epilepsy. जिस तरह मैंने कहा, depending on what area is involved. इसी तरह there are different types of epilepsy depending on whether the whole brain gets affected or just one part of the brain. जिसमें one part होता है, that's called a partial epilepsy. जिसमें पूरा brain involved होता है, उसमें you lose consciousness. और one very peculiar kind of epilepsy is called an absence seizure. Absence seizure is a generalized seizure, पूरे brain को involve करता है without affecting the motor cortex. और उसके अंदर मोटर कॉर्टेक्स डीपोलराइज हो गया है सडनली विदाउट कॉजिंग एनी डिस्चार्ज. सो उसमें मूवमेंट नहीं होती. द पर्सन जस्ट काइंड ऑफ passes out, no, doesn't even pass out, it just disappears from the present time for a short while and then comes back, not knowing what happened in those 10 seconds. Right? So बड़ी weird सी चीज़ें हैं. There is a seizure, a kind of a seizure which is called gelastic seizure. Gelastic seizure is a seizure of the laughing center. और उसमें epileptic attack होता है तो बंदा हंसना शुरू कर देता है. So there are different kinds of seizures. जी बच्चे. So sir, there is a person in our family who's like epileptic. So like I asked my mom that how did it start. So she was like that इनको कभी बचपन में बुखार हुआ था. तो उससे हो गया. ये बिल्कुल possible है. That's what I was telling you कि कुछ चोट लगी, that left a scar. बुखार हुआ, probably बुखार was because of a brain infection, that left a scar. So जो epilepsy इस तरह की किसी cause से हो रही है, it's usually secondary epilepsy. दूसरा उनको like their parents keep like saying that इसके ऊपर pressure ना डालो, इसको like बोला वो तो does that? वो जो पीछे से question आया था ना triggers के बारे में, वो जिनको epilepsy हो, उनका threshold lower हो जाता है. So there are things that can actually trigger seizures. Flashing light is one of the strongest triggers. Bright flashing light. जब यहाँ तक कि जब हम EEG करते हैं, electroencephalogram, जिसमें electrical activity record करते हैं to identify where the discharge is coming from, अगर वो नहीं आ रहा होता और सारा कुछ normal होता है तो उसमें हम photic stimulation देते हैं. Strobe light होती है during that recording और उसमें वो stimulate करते हैं just in the hope of trying to trigger a discharge. So there are different triggers जो epileptic attack trigger कर सकते हैं. There are different phases of the epileptic seizure. जी बच्चे. Sir, in the past, it was considered that दोनों brains के halves को separate कर देते to treat epilepsy. Was that just to control the propagation? या कोई और? Yes, it was only controlling propagation. Split brain करते थे. आप दरमियान से सारे connections काट देते थे. उसका reason यही है कि epilepsy जनरलाइज ना हो जाए. जनरलाइज जब होती है, पूरे ब्रेन को जब इन्वॉल्व करती है तो बंदा बेहोश हो जाता है. द होल ब्रेन डीपोलराइजेस और वो थोड़ी देर के लिए वो रीपोलराइज होते हुए उसको टाइम लगता है तो वो उतनी देर के लिए बेहोश रहता है. नहीं, वो एक अगर फोकस एक ब्रेन में है तो इट फेल्स टू स्प्रेड टू द अदर ब्रेन, बट इट brought about a lot of other cognitive problems जिसकी वजह से the procedure was abandoned. 4 stages हैं. प्रोड्रोम का मतलब है जब वो एरिया थोड़ा सा डिस्चार्ज करना शुरू करता है तो यू गेट द फीलिंग दैट समथिंग इज गोइंग ऑन. और साथ ही देन देयर इज इक्टस. इक्टस इज दैट एपिसोड ऑफ सीजर, आपको अटैक हो जाता है. इक्टस के बाद वो चूंकि इतनी इंटेंस मोटर एक्टिविटी है या न्यूरोनल एक्टिविटी है ब्रेन की कि न्यूरोट्रांसमीटर
ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो जाती हैं, वो सारे डिप्लीट हो जाते हैं. So for a short while after the seizure, the person feels fatigued, slow, drowsy. There are many people who actually fall off asleep. और उसके बाद इंटरेक्टल फेज वो है जिसमें 2 एपिसोड्स के दरमियान बंदा नॉर्मल होता है. इन सारी चीज़ों की बाकायदा डेफिनेशंस हैं. मोटर्स डेफिसिट्स के बाद एक सेंसरी डेफिसिट्स की भी आपको एग्जांपल. सेंसरी डेफिसिट्स में भी डेफनेस है, ब्लाइंडनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सेंसरी डेफिसिट हो जाते हैं. लेकिन बार बार हम विजुअल पे इसलिए आते हैं क्योंकि विजुअल सिस्टम इज़ रादर कॉम्प्लेक्स, और विजुअल हमारी वर्ल्ड जो है वो बहुत हद तक विजुअल है. 60-65% ऑफ आवर ब्रेन कॉर्टेक्स इज डेडिकेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ विजन. सो विजुअल सिस्टम के अंदर जो डेफिसिट्स हैं, जिस तरह हमने पहले बात की कि डिपेंड्स ऑन वेयर द लीजन इज, इसी तरह विजुअल सिस्टम में भी अगर पूरी आंख की एक ऑप्टिक नर्व कट जाती है तो दैट आई स्टॉप्स सीइंग, राइट. लेकिन देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ द विजुअल सिस्टम जहां पे बहुत सारे फाइबर्स क्रॉस ओवर कर गए हैं, बहुत सारे फाइबर्स स्प्रेड आउट कर गए हैं. उसमें अगर लीजन होती है तो आपका जो फील्ड ऑफ विजन है उसमें डिफरेंट तरह के डेफिसिट्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट peculiar deficits is when there is a small gland at the base of the brain called the pituitary gland. Pituitary gland के अंदर जब ट्यूमर होता है तो right above the pituitary lies this optic chiasm. Chiasm is where the visual fibers are decussating, where the visual fibers are crossing over from one half to the other. और वो हमने बात की थी विजुअल सिस्टम में कि वो जो decussating fibers हैं वो पूरी right optic nerve left side पे नहीं जाती, half of it goes to the left side, and उसी तरह left की half optic nerve के fibers go to the right side, and by crossing over of half of the fibers जो peripheral field है वो पूरा right peripheral field हमारे left brain में चला जाता है, left peripheral field right brain में चला जाता है. So ये जो crossing over fibers हैं, जब pituitary tumor होता है तो वो crossing over fibers affect होते हैं, और उसके affect होने की वजह से हमारे sides के दोनों आंखों के पेरिफेरल फील्ड्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. और ये सच ए वियर्ड डेफिसिट. मेरे पास हमारे ही मेडिकल कॉलेज का एक बस ड्राइवर आया था विद द कंप्लेंट कि सर मैं जब बस चला, एंड ही वाज द बस ड्राइवर जो हमारे स्टूडेंट्स को लेके जाता था घरों में, और उसने कहा जी कि मुझे प्रॉब्लम ही ये होती है कि मुझे जब कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होती है तो मुझे नज़र नहीं आती, वो जब सामने आ जाती है तो मुझे एकदम ब्रेक लगानी पड़ती है. That's so dangerous, right? So उसको जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसका पेरिफेरल फील्ड लॉस्ट था ऑन बोथ साइड्स, और जब उसके स्कैन्स करवाए तो ही हैड अ पिट्यूटरी ट्यूमर. सो पेरिफेरल फील्ड का लूज होना, चूंकि आपका जो ओवरलैपिंग फील्ड है, द स्टीरियोस्कोपिक फील्ड, वो आपका सेंट्रल फील्ड है. सो वो अगर आपका इंटैक्ट रहता है तो देयर आर थिंग्स यू नेवर इवन नोटिस इन द पेरिफेरल फील्ड. ब्लाइंड स्पॉट का एक एक्सपेरिमेंट है, वो अब किसी वक्त मौका मिला तो वो भी आपको दिखाएंगे. देयर इज एन एरिया इन द रेटिना वेयर देर आर नो रॉड्स और कोन्स, द नो लाइट सेंसिटिव सेल्स आर देयर, और उस जगह पे अगर आप फोकस करना, किसी चीज़ को फोकस करना शुरू करो तो वो इमेज गायब हो जाता है फ्रॉम द पेरिफेरल फील्ड. द रीजन, एंड वी हैव 2 blind spots, one in each eye. The reason we don't feel those blind spots is because we have 2 fields of vision, और वो दोनों ओवरलैप करते हैं. एक का ब्लाइंड स्पॉट दूसरी से कवर हो जाता है, दूसरी का ब्लाइंड स्पॉट इससे कवर. सो इसी तरह पेरिफेरल फील्ड चूंकि मोनोकुलर है, सेंट्रल फील्ड बाइनोकुलर है, इसलिए पेरिफेरल फील्ड का लॉस यूजुअली इग्नोर हो जाता है. बट व्हेन यू सिट एंड एग्जामिन अ पेशेंट यू रियलाइज कि ओह ये नाक की सीध में तो देख रहा है बट बिल्कुल आउटसाइड जो है वो विजन उसका नहीं है. नो, ब्लाइंड साइड स्टडीज और हैं. Consciousness. Who can define what is consciousness? Come on, कुछ तो होगा ज़हन में. I'll match your question with an equally vague answer. It is a state of being. State of being. Well, good. It's a good start. Anyone else? जी बच्चे. It's like the awareness of things that are going on. Very good. It's like awareness. Metacognition, being able to Metacognition. क्या बात है.
Good. Any more answers? It's like pornography, you know it when you see it. this is a Supreme Court के justice ने अमेरिका में कहा हुआ है. I'm can say that publicly nowadays. No, हाँ, remember this is being recorded. वो बेड़ा Okay, consciousness के ऊपर actually पूरा एक lecture है. I was actually thinking of awareness. I like that. Yeah, I like that. Consciousness is when we are aware of our surroundings, when the state of being भी ठीक है, लेकिन that is more in sync with life. So consciousness is being aware of whatever you perceive, and even if you, जी madam. Sir, I'm going to save this for because we have 2 lectures on consciousness. But when you are in a dark vat, like जब आप पानी में जैसे I've actually done this, you go into this काला पानी, so all your sensory input is lost. I'm still conscious. हाँ, बिल्कुल सही है. I was getting to that. कि it is एक तो हमें जल्दी बड़ी है ना. It is making sense of whatever you perceive, and at times even making sense of your inner perceptions, जिसको एक्स्ट्रोसेप्शन और इंट्रोसेप्शन कहा था डॉक्टर बासमा ने. आपको इंट्रोसेप्टिव परसेप्शन भी होती है. जी बच्चे, उधर से हाथ आया था. आंसर हो गया क्वेश्चन. ओके, अगेन कॉन्शियसनेस को पढ़ने के लिए हमें अनकॉन्शियस स्टेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है. ये इतनी वेग चीज़ें हैं कि इनके अंदर डिफरेंशिएट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. वो सारी परसेप्शन, सारी कॉग्निशन हमने पढ़ने के बावजूद हम कह रहे हैं कि वो जो अवेयरनेस है, वी आर नॉट एबल टू क्लियरली define what awareness is and what it implies. So we'll reserve this for a full lecture, which is on the next week probably. लेकिन हम disorders के बारे में Interject a quick comment. I think the word consciousness itself is confusing because the second picture was about someone who is not awake. Consciousness can be more than just being awake. You don't fall asleep on the floor like this. She actually fell and is knocked out and passed out. So awareness is, you're right, they're so unclear. These terms are not very sharply defined, as sharp as the physical things. जिस तरह हमारी बाकी cognitive चीज़ें भी उतनी sharply defined नहीं हैं in science, उसी तरह this is one of those things. और डॉक्टर बासमा ने पेन पढ़ाते हुए आपसे एक बात की थी कि why does pain feel painful, yeah, unpleasant and noxious, and why does pleasure feel good, for the lack of any other word? So वो जो why है ना, वो we can't define. हम उसके neural correlates तो define कर सकते हैं कि जब हमें pleasure होता है तो फलाना एरिया हाईलाइट हो जाता है, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस फायर करना शुरू कर देता है. लेकिन वो जो फीलिंग है जो मुझे हो रही है while I am being pleased, वो क्या है, वो डिफाइन नहीं हो सकती. उसी तरह कॉन्शियसनेस भी है, यू कांट डिफाइन इट. लेकिन we'll talk about this at length in one of the lectures. फिलहाल वेरी क्विकली, क्योंकि मूड डिसऑर्डर्स के बारे में जब अभी शुरू में हमने क्लासिफाई किया था तो एक फिजिकल डिसऑर्डर्स थे, एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स थे. फिजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन में यही मूवमेंट, सेंसेशन, ये चीज़ें, इनकी कोऑर्डिनेशन, इनकी इंटीग्रेशन वाला मैंने कोई अभी मेंशन नहीं किया. देयर आर डिसऑर्डर्स जिसमें सेंसेशन भी इंटैक्ट है, मूवमेंट भी इंटैक्ट है, फाइन ट्यूनिंग भी इंटैक्ट है, लेकिन उनकी इंटीग्रेशन गेट्स लॉस्ट. इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट, लेकिन टू रन देम थ्रू क्विकली, मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो बेसिकली मूड की दो एक्सट्रीम्स हैं, एंड दे आर अ स्पेक्ट्रम बिटवीन दोज टू एक्सट्रीम्स. वन इज एक्सट्रीम इलेशन and the other is extreme depression. ठीक है? There are different theories about it. One of the theories says that depression as such doesn't exist.
it is the lack of motivation, lack of stimulation that we feel when we are elated. जिस तरह light और darkness के बारे में कहा जाता है कि darkness doesn't exist, it's just the absence of light. But I don't buy this theory. Depression is a real thing. और वो जो real thing है वो इसलिए है कि depression के अपने neural correlates हैं. There are circuits that are actively firing when somebody is depressed. It's not that the happy circuits lose firing, they stop firing. There are active circuits जो fire कर रहे हैं when somebody is depressed. And one of those areas is, Dr. Basma ने brain section में एक चीज़ दिखाई थी, corpus callosum is the big connection between two hemispheres. और उसके ऊपर वाला जो cortex on the inner surface of the brain, जो दो hemispheres हैं, उसके corpus callosum के ऊपर वाला जो cortex है, that's called the cingulate gyrus. Cingulate gyrus का जो anterior area है, anterior 1/3, जो front का 1/3 area है, that actively fires in depression. और अगर उसकी फायरिंग और इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आप किसी तरह दवाइयों से फार्माकोलॉजिकली या इलेक्ट्रिकली सप्रेस कर दो, तो पेशेंट्स स्टॉप फीलिंग डिप्रेस्ड. So I don't know where I read this, but there was a network, the default mode network, that was responsible for metacognition again, that would show higher activity when a patient was depressed. Is that also because when most people are depressed? नो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की हमने बड़ी डिबेट की है कि प्रेजेंटेशंस में डालें कि ना डालें. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और उसको आप लोगों को डिफाइन करने के लिए पहले बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं. डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज दैट एक्टिविटी इन द ब्रेन दैट इज गोइंग ऑन व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. और वो बेसल फंक्शंस को मेंटेन करने की भी एक्टिविटी नहीं है. सो मेटाकॉग्निशन को वो डिफाइन करते हैं कि ये वो प्रॉबली होगी जो इस नेटवर्क से चल रही है, बट वी हैव नो एविडेंस फॉर इट. सो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क इज गॉट नथिंग टू डू विद डिप्रेशन. दैट्स अ बेस लाइन ब्रेन एक्टिविटी. आई थिंक आई विल एंड माई टॉक हेयर. मूड डिसऑर्डर्स नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे विद कॉग्निशन एंड शिज़ोफ्रेनिया. नेक्स्ट क्लास के लिए देर इज़ अ स्मॉल क्विज कह लो या असाइनमेंट कह लो, ये आप नोट कर लें. वो असाइनमेंट ये है कि मूड डिसऑर्डर्स के स्पेक्ट्रम आप लोगों ने लिख के लाने हैं. मूड डिसऑर्डर्स में इलेशन भी है, मूड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन भी है, मूड डिसऑर्डर्स में दरमियान में कहीं पे नॉर्मेलिटी भी है कि कोई हल्का सा खुश है, हल्का सा डिप्रेस्ड है. लेकिन इसके अंदर 4-5 और टर्म्स भी हैं. वो क्या हैं, क्या कहलाती हैं, किस तरह होता है. आई नीड यू टू जस्ट लुक देम अप, briefly read them up. It's probably a 10-15 minute read and we'll talk about them next time. जी बच्चे. So just like names and rough understanding Yes. of all the disorders. Mood disorders. They're not many. ठीक है, क्योंकि हमने नेक्स्ट में बात करनी है एक ऐसे डिसऑर्डर की which carries all of them. That's why I just need you to have an idea about what they are. No. That's not a disorder. वैसे एक consciousness की definition ये भी है, that disturbing interval between two naps. So वो हो सकता है consciousness. जी बेटा. Sir, the part that you just mentioned, gyrus, which is controlling depression, does it have any correlation with the motor cortex? No. Because, for instance, there have been many studies which have shown that depressed people who have incorporated workout in their routine have improved. Yes. Yes. नेटवर्क इतना एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक मोटर के साथ नहीं है. दिस इज सब जेन्युअल सिंगुलेट गायरस. जेन्यू कॉर्पस कैलोजम का एक हिस्सा है, उसके नीचे वाला जो गायरस है उसको हम सब जेन्युअल सिंगुलेट कहते हैं. ब्रीफली ब्रॉडमैन एरियाज मैंने आपको बताए थे, वो जो नंबर किए हैं ब्रॉडमैन ने. दिस इज एरिया 25. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड रीड इट आउट. सो मुझे कोई मैकेनिज्म बता सकता है कि हाउ डज एक्सरसाइज improve mood? क्योंकि ये आपको मैं इमोशन में बता बैठी हूँ. Yes. जी पुत्र, white shirt. It raises endorphins.
वेरी गुड, Absolutely, वेरी गुड. जबरदस्त. दूसरा सवाल मुझे ये बताए, जो सोच के बताओ कि आर ऑल सीजर्स एपिलेप्सी? नो. सो एपिलेप्सी कौन से सीजर्स होते हैं? डॉक्टर नासिर ने बताया आपको लेक्चर अभी में. बताया आपको. कितनेवें सीजर के बाद आप एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कंसिडर करना चाहिए? I wouldn't expect them to really नो know ये this. तुक्का मारे हैं ना ये. I mean they are learning हाँ, by तुक्का तो तुक्का मार मारो सकते हो, fine. ये तो बात सही है. So the question is कि कितने सीजर्स के बाद आप एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कर सकते हो? जी पुत्र. Because we did define it to be episodic. If you don't have a diagnosis, maybe you have one seizure a year, right? Huh? If you have epilepsy, you have some amount of triggers that you can track, or a few a month, or maybe 3 or 4 in 2 months. Does everybody agree? मुझे साल का एक सीजर होता है, मुझे एपिलेप्सी है कि नहीं है? हो सकता है. So पुत्र पता है सारी एपिलेप्सी ट्रिगर ड्रिवन नहीं होती, या हम कम से कम उनके ट्रिगर्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड नहीं करते. सो बेसिकली जब आपको एक सीजर होता है ना, तो उसके ऊपर अनलेस आप ईईजी करो, और कई दफ़ा तो हम ईईजी करते भी नहीं, अगर बुखार में या आपने बहुत marijuana पी हुई थी और आपको उसके बाद सीजर हो गया, तो वो दैट्स जस्ट डिसमिस्ड. You wait until the second seizure, then you look for a cause, और उसके बाद होता है. और कुछ लोगों को सीजर्स जो हैं वो साल में एक होता है, और अगर कई दफ़ा जब लोग दवाई खाते हैं तो 3-3 साल 4-4 साल नहीं होते. बट रिमेंबर सीजर अगर आपको ड्राइविंग करते हुए हो गया है, तो ना सिर्फ ये कि आप अपने आप को मारेंगे, बट आप रोड पे 5-6 और लोगों को साथ मारेंगे. राइट. सो देयरफॉर जब आपको एपिलेप्सी डायग्नोज होती है, उसके बाद आपको 3 साल चाहिए होते हैं सीजर फ्री टू बी एबल टू गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस बैक. राइट. सो ये वाली सारी चीज़ें सोचने वाली हैं.